Very good evening. On behalf of Skill Edge, I, Indranil, welcome all the participants for this induction session on Finance Analyst Edge. To become an analyst in finance domain. Dream to work in Goldman Sachs, JP Morgan, and companies alike. I am here to introduce you about the company. Skill Edge is an award-winning vernacular-led skill tech platform awarded by IIT Kharagpur, preparing graduates, postgraduate students to become day one job ready, that is finance analyst profile ready, that too in within 12 to 15 weeks. पिछले 2 साल से we reach across 3.5 lakh students. And उन स्टूडेंट्स को हमने फिनांस एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट बनने के लिए, इस रोल के लिए हमने तैयारी करवाई है, दैट टू इन फ्रेशर लेवल एज वेल एज इन एक्सपीरियंस लेवल. We as a company has been founded by teachers and industry veterans. हम आप लोगों को फिनांस एनालिस्ट बनने के लिए, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं, जिस तरह की तैयारी की जरूरत है, that we will do in vernacular led language. It means Hindi plus English. And this is our strength. This is the beauty of this training program. As a company, we are a funded company with more than 20 investors and 8+ members in our advisory board. Mr. Rohit Ghosh sir, he is the founder and CEO of Skill Edge, having more than 17 years of industry and teaching experience. He's coaching more than 10 lakh students in India, and he is the INSEAD France alumni, one of the leading business management school in the world. Co-founder of this company, Mr. Shailendra Marathe sir, IIM Bangalore gold medalist, chartered accountant by profession. And we also have Mr. Prakash Bhatna sir, who is IIM Ahmedabad alumnus. He is the chief revenue officer of this company. In addition to this, we have 40 enthusiastic members in Skill Edge, जो पिछले 1.5 से 2 साल से हमारे साथ है, हमारे साथ काम कर, and it helped the company to impact the life more than 5,000 students who have been part of our different various programs. In a nutshell, Skill Edge is an skill tech platform. By using technology, we do skill development for specific job titles at the fresher level as well as in experience level. And what are those job titles? The job titles are finance analyst, equity analyst, credit analyst, investment analyst, research analyst, risk analyst, and many other. If you are looking for this kind of career and you are not from the tier 1 college, you are not from a tier 1 colleges, you are from non-IIT, non-IIM colleges, but you want to build your career in one of those job titles, then definitely Skill Edge is the platform, because we care for your career. Awards and recognition. Skill Edge is awarded by IIT Kharagpur as a Best Startup Award in the year 2020 in their Global Entrepreneurship Summit. Many more awards and recognitions Skill Edge has received. We are associated with IIT Kharagpur, FTPO, that is Federation of Training and Placement Office, CII, Confederation of Indian Industry, Startup India, TAI Pune, Business Outreach, and many other. Our founding team, I have already told you, Mr. Rohit Ghosh sir, CEO and the founder, Shailendra Marathe sir, CFO and the co-founder, Prakash Bhatna sir, and Sandeep Kumar sir.
Advisory board member, we have a very strong advisory board member. Mr. Devi Prasad sir, former DCHR head Infosys, former CHRO CA Tires, former CHRO Atos. Mr. Vibhor Mittal sir, senior director from Infosys. Vineet Gupta sir, Tushar Lunkand sir, Suresh Mahalingam sir. He worked in many big organizations like Tata AIA, ITC, Aviva, Kellogg's, Principal, and many other. Jeetal Shah sir, Atul Gupta sir, Pratik Chaudia sir. They are all industry veterans, industry professionals, because it's a industry-led training program. Now, one thing is very, very important, student, that is who is going to train you, who will teach you. It's very important. Mr. Ankit Bajaj sir, chartered accountant by profession, over a decade of experience. He provides training to corporate learners, B schools learners, CA, CS, CFA, USCWA, SECA aspirants. And Ankit sir is the head coach of this training program. Mr. Rohit Ghosh sir, I have already told you, he is the CEO and founder, INSEAD France alumni. Mr. Shailendra Marathi sir, CFO, Chief Financial Officer and co-founder of this company, 25 plus years of leadership experience in diverse industries across the globe. He worked in many big organizations like Dell, Deloitte, Bajaj Finserv, and he is former CFO of Axis. Our industry mentor, ये वो लोग हैं इंडस्ट्री से जो आपको टीच करेंगे, जो आपको ट्रेन करेंगे. Mr. Devi Prasad sir, already I have told about sir, former CHRO of CA Tires, DCHR head of Infosys. Suresh Mahalingam sir, management consultant, board member and business mentor. He worked in many big organizations. And none other than Mr. Rajveer Singh sir, founder of Value Centria, Department of Management Studies, IIT Delhi. It shows what we are doing is being acknowledged by industry people and industry veterans. Flow of today's session. What is finance analyst? Why finance analyst? Normal graduate versus finance analyst. Skill Edge finance analyst program highlight. Place students details, selection test, engagement model, testimonials, and offer. Yes, student, this is not a normal training program. It's different. It's different because it's a training then placement drive program. And in a batch, only 20 students are allowed in a batch. So that's why there is a selection process. There is a selection test. And today, at the end of the session, Mr. Rohit Ghosh sir will join, and sir will tell you some hands-on experience, some hands-on practice about the finance world. So now it's a time to invite today's guest, speaker, mentor, chief coach of this training program, none other than Mr. Ankit Bajaj sir. Yes, students, Ankit sir is present with us. So now I'm requesting Ankit sir, please take the charge of this session. Very good evening. Welcome. Over to you, Ankit sir. Thanks a lot, Indranil sir, for inviting me here. And hello, everyone. I trust all you are doing well. And you are looking forward to make your career, good career, right? So, you know, here we will be giving you training on finance, right? And you will be eligible for the financial analyst role, right? Now, before I proceed towards my next slide, I would like to let you know that I would like to let you know that what actually financial analysts they do into the industry, right? You might be knowing about the accountant, right? You might be knowing about the CEOs and CFOs, right? You might be knowing about finance manager, right? So what is going to be your role if you are getting job as a financial analyst into the company? If I take example of accountant, what accountant do? They record the transactions, right? Whatever monetary transaction company is performing, they will be noting down those transactions into ERP. This is going to be the work of accountant, right? If I take example of CEOs and CFOs, basically what they do, they if I talk about CFO, they take strategic decisions related to finance. Right, this is going to be the role of CFO. So, yeah, whether you will be a CFO in coming time, yeah, if you are performing really well, you can be the CFO also. But what financial analysts they do into the industry, this you should know. Right now, you know when you will be appointing, when you're getting appointed as a
financial analyst into any company, so your work is going to be that you have to analyze the data of company. आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपनी में आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा का. What is the meaning of analysis? Why I'm saying analysis again and again, right? If I take example of Zomato, if I take example of Paytm, lots of companies, in last year they got listed into stock exchange. Now, when any company is getting listed into stock exchange, so what they have to do, they have to fulfill lots of conditions, right? They have to fulfill the norms of SEBI, they have to fulfill the norms of governments and RBI also, right? There are lots of norms applicable on companies if they want to get listed into stock exchange. अब ये norms कौन fulfill कराता है? Financial analyst, right? Your work is going to be that you have to fulfill the norms of SEBI, right? You have to help companies to get listed into the stock exchange, right? You will be helping the companies to get the heavy loan from banks, right? Let's suppose if company is appointing you as a financial analyst, so what company will ask you that just get us good loan from the bank, right? Let's suppose your company is in need of 5,000, 10,000 crore. So वो process आपको fulfill करना पड़ेगा. So ये step by step, I'm telling you that what you will be doing into the industry, right? Another work which you will be doing, that you need to find out the valuation of business. अगर Zomato को stock exchange में list होना है, so उन्हें अपने market share, जो उनका share है ना, उनकी market price find out करना पड़ेगा. Now, who will find out the market price of their share? Your work is going to be that you have to find out the market price of companies who are getting listed into stock exchange, right? अभी market price कैसे find out किया जाता है, right? Now, the calculations and methodology has been changed just because of upgradation in technology. Nowadays, we don't follow asset-based valuation. Right. Till now, if I take 10 years back data, if I take 20, 30 years back data, at that time, what we used to do, we used to follow asset-based valuation method. Asset-based valuation method का मतलब क्या है? मेरे पास दो phones हैं, right? मेरे पास दो phones हैं, and if I ask you to value me, so what you will say that you are having phone whose valuation is 1,50,000, so your valuation is also 1,50,000, right? अभी तक क्या होता था, 10-20 साल ऐसा मेथड फॉलो किया जाता था कि एसेट के बेसिस पे हम बिजनेस को वैल्यू करते थे, बट अब मेथड चेंज हो चुका है. अब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट्स के बेसिस पे बिजनेस को वैल्यू करते हैं. If I talk about Zomato is a loss making company, still it got valuation of 60,000 crore rupees. Right, they don't have asset more than 2-3,000 crore rupees, but still they got valuation of 60,000 crore. If I talk about Paytm got valuation of 1,10,000 crore rupees. Do you believe कि Paytm के पास 1,10,000 crore के assets है? नहीं, उनके पास भी हार्डली 2-3 हजार करोड़ के assets है, केवल उनके पास सॉफ्टवेयर ही तो है, और क्या है उनके पास? Are you able to understand? So now what you will be doing, you will be forecasting the revenues of business. You have to forecast the profits of business. How you will be forecasting the revenues? And Rupesh is saying my video and audio is not clear. Indranil sir, is my video and audio is clear? If one student is facing problem, then I think my audio and video is clear. Yes, sir. Clear, sir. It's clear. Yeah. So Rupesh, what do? You join again. I think there is network issue from your side, right? You join again, Rupesh. Yeah. So you know what? Basically, your work is going to be that you have to use the data, you have to use the technology, and with the help of data and technology, what you can do, you can find out the valuation of business, and this is going to be your work, right? And why I suggest that if you want to make your career into finance, so you should go for financial analyst role first, because this job is non-monotonous job. Again, I'm repeating, this job is non-monotonous job. Why I'm saying non-monotonous? Because if you're appointed as accountant, or if you're working into sales fields, so you might be able to connect this thing that how your job is monotonous, right? Accountant क्या करता है, दिन भर कंप्यूटर के सामने एंट्रीज पास करता है और कुछ नहीं करता है. सेल्स एग्जीक्यूटिव को वही पैटर्न फॉलो करके they have to sell the product. But in case of financial analyst, what you will be doing, you will be using technology, you will be using Excel, you will be using various tools, and every time you will be using updated data, and definitely every time you will be learning something new. You will do sector research, you will do company research, and every time you will be learning about the market. Every time you will be doing lots of research, and that is the best part of financial analyst कि आपको ना इसमें इतने challenges आते हैं कि आपको काम में मजा आने लगता है, क्योंकि ये कभी भी monotonous नहीं होता है. And obviously there is every time growth scope into this profile, right? Now if I talk about demand for this role, now you just imagine you might have completed your graduation and post graduation, right? And you might have completed your post graduation and graduation from tier 2 and tier 3 colleges. You just imagine, you just recall the time when you were doing your graduation and post graduation. You just tell me whether you have used technology, tools, and finance at a time.
कभी आपने यूज किया है क्या टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और एक्सेल को एट अ टाइम? कभी आपने यूज किया है? कभी नहीं किया होगा। टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस ये चीज करते ही नहीं है, राइट? और फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिमांड इतनी है ना मार्केट में कि टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस ये चीजें फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। Because if you want to use technology, tools and data at a time now, so you should get the training from industry experts, those who are already using technology, data and Excel at a time, right? Now, if I talk about your colleges, so who is providing you training? You are getting training from PhDs or people, those who have completed their post graduation, right? They are not working into industry. That is the reason they don't know the trends and what new things are coming to the industry. Right? They don't know about industry. So here we have created a team of 40 industry experts from whom you will be getting the direct training of finance, right? And you know, right now only tier 1 colleges and our institute is able to supply financial analysts to tier 1 colleges, right? If you will check the data, so you will come to know that there are a few institutes like IIMs, IITs, and we are also providing proper training on financial analysts, and our students, they are getting placed in tier 1 companies. And lots of companies, they are appreciating our course, right? Because the kind of training which we are giving and the kind of students which we are supplying into the industry, that is beyond imagination, right? So now you might be able to understand that why demand is so high and why supply is so why demand is so high and supply is so low, because still there is a huge demand, but people, they are not able to supply financial analysts to tier 1 companies. वो industry का expectation ही नहीं fulfill कर पा रहे हैं. So this is about the financial analyst role. So we can jump to the next slide. Yeah. Now, what kind of jobs you will be getting once you will be completing this course? You will be eligible for more than 50 job profiles, right? If you're completing this course, so what kind of jobs you will be getting? You can get the job of investment analyst, credit analyst, risk analyst, financial statement analyst, portfolio analyst, wealth manager role you can get, and lots of other jobs are available into the industry. You can get the job of research analyst, right? So lots of jobs are available into the industry. And what kind of company and sector will absorb you once you will complete this course, right? If you are able to upgrade proper skills inside you, you will be getting the job for sure. And what kind of companies they will be giving you the job? So you can get the job in tech sector, right? You can get the job in private equity firms, venture capitalist firms, mutual funds, banks, credit rating agencies, portfolio managers. You can become a portfolio manager. You can become a member of financial institutional investors, and more than 500 companies are there who are ready to hire financial analysts, right? So there's a huge scope if you are able to complete this course properly and if you are developing proper skills, right? So next slide. Okay, now if you see here, right now more than 30 to 40,000 openings are there for financial analysts. More than 40,000 openings are there, right? If you see, we have taken updated data here. So more than 20,000 jobs are available for financial analysts. If you see the job openings data, more than 5,000 jobs are available for credit analysts. More than 6,000 jobs are available for investment analysts, right? And on an average, what package you will be getting? I'm talking about average package. You can get average package of 5 to 6 lakh rupees into the industry. There is no maximum barrier. You can get the package of 6 to 8 lakh, 10 to 12 lakh also, if you are if you are doing excellence in this financial analyst course, right? So there is no upward barrier, but on an average, you can receive the package of 5 to 6 lakh rupees. And if you want to relocate to any metro city, or if you want to relocate to big cities, so for sure, this financial analyst program can help you in relocating to big cities, right? So every metro city or every big city, they are ready to absorb financial analysts. And it's a great opportunity for you if you want to make your career into finance. Okay. So next slide. Now, what kind of skills you have to develop? Right? If you see here this slide, so you will be able to understand that what you have to learn if you want to become a successful financial analyst, or if you want a job in tier 1 companies, right? The very first thing is that you should know how to analyze the data. You should know how to read annual reports, how to do sector research, how to do company research, how to analyze the financial statement, right? This is the most important thing. Second is you should have the knowledge of capital market, money market, and financial market. आपको फाइनेंशियल मार्केट का डिटेल में नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है ना, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट कैसे काम करती है, राइट? यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. गिव मी अ मोमेंट, आई एम कमिंग इन 1 minute.
Yeah. So, what I was saying that you should know about capital market, you should know about money market, right? तो इसमें हम लोग आपको डिटेल ट्रेनिंग देंगे, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही ट्रेनिंग मिलेगी इन सब चीजों में. You should know about financial instruments, right? What are financial assets? What are financial liability? How equity instrument works, right? You should have great idea about these things, right? So we will be giving you full-fledged training on all these topics, right? Also, you should know how to do research, how to write down reports. You should know how to prepare financial model. You should know how to value the business. These all things you should know in detail. And here you will be getting the training from industry experts in detail. For sure, you will be getting the training from industry experts who are already working into industry from last 15 to 20 years. Yeah. So next slide. Yeah. Now, apart from sessions, definitely we will be giving you lots of sessions, right? Industry experts, they will be taking your live sessions and they will be giving you live training. But apart from sessions, what other things we provide, and what are the USP of Skill Edge, right? If I talk about USP, so here if you see, we focus on continuous assessment a lot. Right? We focus on continuous assessment a lot. What is the meaning of continuous assessment? Right? Let's suppose if you're buying a course from Udemy or any other institution, right? So what you will be doing? Give me a moment, guys. I'm getting an urgent call. Just give me a moment. Sorry. Yeah. Sorry guys, I got an urgent call. Yeah. So, here, if you are taking course for Udemy or any other institution, so what you will be doing, you will be attending the session, right? So, when you are buying online courses from some institution, people, they do procrastination. Do you know what is the meaning of procrastination? कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? But स्किल एज में आपको ये मौका नहीं मिलेगा. स्किल एज में बेसिकली हमारा क्या होता है, हमने एक टीम क्रिएट करके रखी है, right? Those that team will be giving you continuous follow-up. Let's suppose if you are not attending the sessions on timely basis, they will send you the notification every time that you are not attending the session. Your performance is getting your performance is not up to the mark, right? Also, we float regular MCQ test questions, right? So let's suppose if you're attending today's session, we will be giving you MCQ test, right? We will be floating the MCQ test, and you have to attempt those questions at a given deadline. Right. So if you're not attempting the questions, so you will be getting a notification from our team. Sometimes our CEO and CFO, they will call you, right? That why you're not attempting the exams, why you're not attending, why you're not coming for the sessions, right? So you will be getting a continuous follow-up. So we give lots of emphasis and weightage to assessment, right? So we will be continuously assessing your performance, and anyhow we won't allow you to do procrastination. सबसे बड़ा एडवांटेज ये है. देखो प्रोक्रास्टिनेशन में प्रॉब्लम क्या होती है ना, अभी थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है हमें, है ना, कि मैं आज कर लूंगा, कर लूंगा, लेकिन करियर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है प्रोक्रास्टिनेशन. So here we won't allow you to do procrastination because we are having team of 6-7 members who will be continuously giving you the follow-up. They will be sharing your attendance sheet in the group, and they will be asking you the reason that why you are not attending the sessions properly or why you're not attending the test, right? Apart from this, we will be taking your at least 10 to 15 interviews. So we have created a panel, and that panel consists of around 3 members. One is going to be communication faculty, second is going to be industry expert, and third is going to be internal faculty. We 3 will be taking your interviews, right? At least 10 to 15 interviews we will be taking, and we will be guiding you that where you are making mistake, right? So let's suppose if you are completing first module, so after first module we will be scheduling your interviews, and we will be asking lots of questions from that module, and also we will be giving you 500 to 600 interview questions, and guys, just trust me, if you are attempting 10 interviews, nobody can stop you in getting the job in best company, right? You will see a drastic change in yourself, right? Because in every interview, we will guide you that where you are making mistake, why you are not able to introduce yourself properly, how to present yourself, right?
These things we will be considering, and we will be giving you guidance on these particular things, right? Apart from this, you will be getting mentoring session from industry experts. So every week we invite lots of industry experts from various profiles, right? And they will be taking your mentoring session, and they will be telling you that what new things are coming to the industry, how you should follow the trend of industry. They will be guiding you on these particular concepts, right? Also, we will be solving more than 100 case studies here, right? Industry-based case studies we will be solving during the sessions, and also we will be taking lots of presentations of yours, right? Now, if you feel that you are not good in communication, so you can't get the job into the industry, that is quite correct, right? If your communication skills are not up to the mark, so it will become very difficult for you to get the job in tier 1 companies. And that is the reason what we have done. We have appointed a soft skill trainer, right? That trainer is having more than 15 years of industry and B school experience, right? So that trainer will be giving you continuous training on communication for 3 months. Also, she will be guiding you that how to prepare your resume, how to present yourself. And if you are following her instruction, you will see a drastic change in your communication skills also, right? So communication is equally important, and we are giving lots of emphasis to communication also. So here you will be learning about the communication a lot, right? So next slide. Yeah. Now, here what we have done, we have divided our course into 2 parts, right? Again, I'm repeating, we have divided financial analyst course into 2 parts. First part is basic foundation module, and second part is advanced module, right? Now, lots of time we receive query from non-commerce students. Non-commerce students, they say that, sir, we are from non-commerce background, and our basic concepts related to finance are not up to the mark. So how we will be able to learn the advanced concepts? That is the reason we have created a separate basic foundation module where you will be learning each and every basic of finance, right? So that module consists of 8 subjects. So what we will be covering in that module, we will be giving you training on accounting, how to prepare financial statement, how to do fundamental analysis of annual reports or companies, right? We will be giving you training on financial management, cost management. Also, we will teach you the basics of Excel and basics of stock market. So first we will build your basic concepts, and after that we will be asking you to jump into advanced concepts, right? In advanced module, we will be giving you training on advanced concepts with the help of which you can get the best job into the industry. So you will be getting training on equity, research, you will be getting training on risk management, credit, financial model, you will be getting training on our financial instrument, financial markets, data analytics, and advanced Excel, right? These are the 8 modules which we will be covering in advanced module, right? 8 subjects we will be covering in advanced module. Now, how we will deliver the session, right? What is the delivery mode of session here? So if I talk about basic foundation module, so you will be getting the recorded session. We say it as a live alike session. And once you will receive the recorded session, for every recorded session, for every chapter, you will be getting live doubt clearing session. So आज जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, राइट? उसके बाद आपको क्या होगा? लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लिया जाएगा. मैं और बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, वो आपसे आपके डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, राइट? एंड ऑल्सो वी फ्लोट लॉट्स ऑफ एमसीक्यू टेस्ट, एंड फॉर एवरी एमसीक्यू टेस्ट वी keep separate test solving sessions, right, where we will be solving the test questions, right? So we give lots of live sessions, right? So here for basic foundation module, we will be getting recorded sessions, and for every recorded session you will be getting a live doubt clearing session. Now if I talk about advanced module के लिए आपको सारे के सारे लाइव सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइव आएंगे, जैसे अभी हम लोग लाइव है, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको लाइव टीच करेंगे, राइट? लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. सो जो बेसिक फाउंडेशन मॉड्यूल है वो हमारा 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, राइट? सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू 20 days रिकॉर्डिंग, एंड फॉर एवरी रिकॉर्डिंग वी विल बी टेकिंग योर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. जैसे आपके 20 दिन के सेशंस कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपका एडवांस मॉड्यूल स्टार्ट होगा, और उसमें आपको लाइव सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे. सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइव आएंगे और वो आपकी ट्रेनिंग लेंगे, आपको लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, राइट? वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस कोर्स इन 3 months. In 3 months we will be completing the course, and after 3 months your placement process will start, right? So once you will complete this course, after 3 months you will be getting the placement. Within 3 months, sorry, not after, within 3 months after completion of course, you will be getting the placement. Okay? Now when we will be scheduling your sessions,
we will be scheduling your sessions in evening around at 8 p.m. Right? In a week, we will be scheduling around 3 to 4 sessions, 3 से 4 sessions आपके लगेंगे. And उसके बाद क्या होगा? Basically आपको जो recordings दी जाएंगी, आपको उनके लिए भी time दिया जाएगा कि आप कैसे recordings को complete करें, and बहुत सारे assignments भी आपको दिए जाएंगे. Right? So on an average, what you have to do in a week, you have to devote 8 to 10 hours towards your studies. Right? Not more than 8 to 10 hours you have to devote. And definitely in 3 months we will be able to complete this course. And if you are sincerely attending all these sessions, and if you are following our instructions, you will see a drastic change in your concepts. You will see a drastic change in your presentation skills and communication skills also, right? And definitely, if you are completing this course successfully and properly, nobody can stop you in cracking the interview in first attempt itself, right? That is about the course. Now you can ask your questions. I'm ready to take your queries, right? You can write down your queries in chat box, or if you are comfortable in unmuting yourself, so you can unmute and you can speak. Hello, good evening, Ankit. Sanchit, hi. Hi, okay. Actually, my doubt is that you have said that you will be scheduling session on the weekdays, but as I am working with an organization, so I am not able to take that session on weekdays because it will be very difficult for me because my shift timings are 11 to 8 and 11 to 9, sorry. So that's why how can I attend that sessions? Okay, so that's a great question, Sanchit. We will be providing the 100% recording, right? So let's suppose if you're missing some of the lectures, so you will be getting the recording of live sessions, right? And in a week, we will be scheduling around 3 to 4 sessions. So weekdays में तो आपके 2 sessions लगेंगे, weekends में 2 sessions लगेंगे ही लगेंगे. उसमें से 1-2 sessions जो extra लगेंगे वो weekdays में लगेंगे. So अगर आप comfortable हो that you are ready to watch the recording for 1 or 2 days, right? So then you can manage. That's not a problem, right? Because you will be getting 100% recording from our side. Actually, recording is one thing, but live sessions are the things that we from where we can learn That's in a very absolutely correct. But you can attend the live sessions on Saturdays and Sundays. And if you are having any query related to weekdays sessions, so you can ask your queries on weekends. That we can do. We can allow you for 50% attendance. Usually we don't allow students whose attendance is less than 80%. But we also take exceptions. So if you want to follow this process, so you can join this course for sure. on a weekday, what will be the timing of the session? Timing will be around 8 p.m. We will be scheduling Oh, a session 8 to 9, or sometimes we schedule sessions from 9 to 10 also. and how much long it will take on one session? We schedule a session for 1 hour or maximum for 1.5 hours. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, Sanjay. Thanks. Any other question, guys? It will be great if you ask your question as soon as possible. Sir, what would be the fees, sir? Like fees For structure? fees, Deepalalji, you have to wait for 5-10 minutes because Indranil sir, he will be telling you about the fees. He will be giving you the idea about companies and alumni, right? So थोड़ा देर आप wait कीजिए, आपको 5-10 मिनट में fees का सारा detail पता चल जाएगा. Basically, we follow pay after placement model, but Indranil sir को ज़्यादा पता है इसके बारे में, so वो ज़्यादा better आपको बता पाएंगे. Yeah, I can see lots of participants are there. Akshay, Alisha, Arjun, Bineet, Chinmay, Harshita, Muskan, Prajakta, Purvi, lots of participants are there. Guys, you can ask your questions if you're having any question. Don't hesitate. Bineet, you will be getting the certificate. For sure, we give certificate. Those who are successfully completing this course, so you will be getting the certificate from our side. Yeah, anyone is having any question, please put your question in the chat box or selection criteria. Akshay is asking what is the selection criteria. We will be taking your test here, entrance test, right? And in that entrance test, we will be asking the basics question, right? We will be asking you the basic questions. So if your basic
concepts are okay and if your IQ level is also okay, so it is very easy to clear that test. So we will be taking entrance test, right? And that is going to be MCQ based test. Yes, guys, any other question? Is there any target or something in this finance job? No, it's not a sales job. It's not a sales job, Harshita. So you don't have to fulfill the targets, right? We focus on core finance job. We won't ask you to join sales of financial instruments job, right? So you will be getting core finance job from our side. There will be no sales target or any kind of target. But you have to finish 8 hours or 9 hours of your working hours. Sir, but if we don't want a placement, then how we will pay? पे का मुझे नहीं पता है, आपको इंद्रनील सर बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, right? So आप इंद्रनील सर से पूछिएगा भी नहीं. Just wait for 5 more minutes. Yeah. Good evening, sir. Yeah, good Hello? evening. Yeah. So my question is that I'm a BCom graduate. I graduated in 2020, and till now I don't have any experience of corporate field. So am I eligible for this program? Yeah, you are eligible for this program for sure. So what you have done from 2020 till now? Yeah. Actually, sir, I am an artist. I'm a guitarist professionally. So I do shows. So that's why I haven't Awesome. applied for the job. That's not a problem. See, if you are curious and serious to make your career into finance now, so Yeah. for sure this course will help you a lot in getting the best job. The thing is that you have to dedicate your time right towards studies, Yeah. and you have to very much focused, and you will get the best job. That's not a big problem. But sir, this 2 years gap can be See, a out of 100 companies, 10 companies they may reject your resume just because of 2 years gap. But 80 to 90% companies, they won't consider this thing if your concepts are up to the mark and if you are able to show maturity at the time of interview. Okay. Thank you, sir. Hello. Hello. Sir, hi, sir. Hi. Sir, I have one queries like these are the topics we learned in the MBA section in finance. So what you told, capital market, equity, something. So again, why should we go for financial analyst, sir? Because we are already covered. But what how you have learned capital market, money market, or equity research in your post graduation? Who has provided you the training? Training in the sense full-time MBA not training. It's like MBA we done. I understood. But you know, if here what we do, we provide live training. What is the meaning of live training? Here, when we will be giving you the training, now we won't be using the books, pre-written books or pre-written modules. We will be giving you industry-based training. So we will be using the real data when we will be providing you the training, right? So if you know about capital market or money market, so most of the concepts, you know, we will be teaching you with the help of NSC website. We will be using NSDL, CDSL website, and from there we will be teaching you these concepts. If you know about standard deviation and beta, till now, you know, you might have learned the manual calculation, but when we will teach you these concepts, so we will be using Excel and we will be taking the real data, real stock prices to give you the training, right? Now, you know, if I will ask you the formula of standard deviation or beta, you will get confused because till now what you have done, you have covered theoretical part. You don't know the practical application of those concepts into the market. So here you will learn the applicability of concepts into the real market. At last, what industry experts from you that you should know the application of concepts, right? You should know how to use these theoretical data in real world. So we will teach you that how to use these data in real world by using live and real data. Yeah, I understand, sir. Like you mean to say like the MBA is like waste of our. No, I'm not saying that it is a waste of time. You can efficiently use your time if you have chosen correct college. Right? अगर आपने correct college choose किया होता ना उस time पे, so you could have said that you have used your time efficiently, right? But with the help, you know that how are your concepts and why you're not getting the job, right? So you can understand that what you have done in 2 years, right? So that this thing you won't be repeating into this course. Okay. Hello. Yeah. Hello. Yeah, Arjun. Yeah. Hi. Good evening, sir. Good evening. Actually, sir, I am planning for MBA in finance from abroad. So this course will help me there for a job. And abroad? Yes, sir.
So you are planning to do MBA, right? Yes, sir. So you want job from our side, or you want job from your college from where you will be doing the MBA? Sir, from there only. I think I was thinking that this skill will add me to find a job there. For sure, this whatever topics we are teaching, it will help you a lot during your MBAs, right? Because one of my cousins, she's chartered accountant and she's doing MBA from US. So day before yesterday, she called me that lots of concepts she's learning from there, but something is missing into those chapters and in their modules in US, right? So I have shared our modules, and she said that your modules are far better than our college modules, because we are covering almost everything related to the finance, right? So for sure this course will help you. You are also providing us some technical knowledge like in Oracle and SAP also, sir. We are planning to give you training on SQL and SPSS, right? So soon we will be including this training. So yesterday I had a discussion with the CEO of company, right? So from this batch itself, or from coming time, we will be giving you the training on SQL and SPSS. And if required, we can give you the training on SAP also. Not Oracle, we can give you the training on SAP. Okay, sir. Thank you. One software we will be using here, right? So we will be giving the training on one software, not all softwares we will be covering. Yeah. Thank you, sir. Welcome. Yeah. गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. Good evening. सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा बीकॉम 2012 में हुआ है और मेरी एज 33 है, क्या मैं एलिजिबल? हाँ सुधीर जी, आपकी एज 33 है, उसके बाद क्या बोला आपने? एलिजिबल हूँ यहाँ पे जॉब के लिए? आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। किस प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं आप? एमआईएस के प्रोफाइल पे। एमआईएस के लिए? जी। Okay. And you have not done post graduation? नहीं। अच्छा. So if you are not into finance background, so what I feel that you can do this course, right? You can do this course, but somehow somewhere you will be facing problem because there is a big gap, right? There is a big gap, but still आप क्या कर सकते हो? Course join कर सकते हो, finance की चीजें learn कर सकते हो, and there are chances you can get the job if you are able to develop the proper skills. So there are chances you can get the job. It's not impossible, है ना? But आप continuously work कर रहे हो 2012 के बाद से. जी. So you can get the job. It's not a big deal. But the thing is that you have to devote proper time towards this course. And if you are developing proper skills, you can get the job. You can switch your career from MIS to finance. That's not a problem. Yeah. Sir, hi sir. सर हम अभी अकाउंट प्रोफाइल से हम स्विच फाइनेंस को हम स्विच कर सकते हैं क्या डेजिग्नेशन से? बिल्कुल अकाउंट और फाइनेंस तो कनेक्टेड ही है ना? कनेक्ट है ना? हाँ वही बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके सर। Yeah, you can switch for sure, and it will give you add-on advantage, because already if you know the accounting ना, तो finance में आपको बहुत help करेगा ये। Yeah. Any other question, guys? Would you like to ask? Rohit sir is with us right now. He is CEO of this company. So Rohit sir, would you like to suggest something to the students? Sir, you are not audible. Yeah, till that, guys, you can ask your questions. I think Rohit sir, he will join again. Yeah. Do you have any other question or query? No, sir. Okay. So Indranil sir, now you can proceed the session. I think we are done with the questions. Now you can proceed. And thanks a lot, Indranil sir, for inviting me here. Thank you. Bye, everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So now, students, we will see. Obviously, all of you are waiting for the pricing and all. Also, Rohit sir is with us. Rohit sir का थोड़ा सा network issue हो रहा है, तो Rohit sir अभी join कर रहे हैं. कुछ hands-on चीजें आपको Rohit sir बताएंगे कि पढ़ाया कैसे. Why this course is different. So before Rohit sir is joining, मैं कुछ चीजें
आपको पहले से ही बता के रखता हूं. Few more things. Already you have seen everything about this training program, about the course. Now, students' commitment that we are expecting, laptop or desktop, is compulsory. Laptop or desktop, because it's a hands-on training program, guys. Android mobile is compulsory to install our app. If you have Apple iPhone, then also no problem. You can use our app, our LMS system, through our browsing link. Performance and interaction is compulsory during the session, because in a batch only 20 students are allowed. So close monitoring हर एक students के ऊपर रहेगा. So आपको perform करना पड़ेगा. Assignments and projects you will do industry live projects, and every week आपको assignment दिया जाएगा, and you have to solve it. You have to submit it in proper time. Now it's a time to know about our alumni. So students, it's a glimpse. I'm showing you the glimpse of our placement. This is not the entire detail. It's a glimpse. Look at the companies and look at the packages. Companies like Mercer, Crystal, IDFC, Bajaj Finserv, and packages like 5 LPA, 4.5, 5.5, 5.9, 5.8, 5.9. It means it's possible. As a fresher, it's possible to get a package like this. And obviously, if you are a working professional, तो आपके लिए तो और आसान होगा कि अच्छे पैकेज मिलना. Few more names. Look at their package, 3 LPA, 3.5 LPA, and they're all fresher. यहाँ पे इस page में जो दिख रहा है, they are all fresher and companies e-clerks. And again, it's a glimpse. Few more companies like Deloitte, Dell, IDFC, Crystal. Look at the package: 6 LPA, 5 LPA, 5.5 LPA, 4.5 LPA, 4.5, 4.5, and the profile like finance analyst, market analyst, MIS budget and planning, MIS executive, finance analyst, and the location all over the India. Almost all the big cities like Bangalore, Indore, Hyderabad, Navi Mumbai, Pune, Delhi NCR, har jagah pe our student got placed. All the big cities are right now, there is lot of requirement. बहुत सारा requirement है. Now, classes, कुछ लोग पूछ रहे थे कि classes कैसे होगा. This particular schedule, ये जो schedule है, 7-day schedule है, इससे आपको बहुत clearly ये समझ में आ जाएगा कि classes होगा कैसे. जैसे अंकित सर ने कहा था कि we have divided our syllabus in 2 parts, basic foundation and advanced part. So जो basic foundation है वो पहले शुरू होगा. जैसे tomorrow 19th of December, ये जो particular batch है, इस बैच के ओरिएंटेशन है. ऑलरेडी बैच फॉर्म हो चुका है, इसके ओरिएंटेशन है टुमारो मंडे 8:15 to 9 PM. ओरिएंटेशन एंड एप्लीकेशन एक्सेस सेशन. एप्लीकेशन मींस आवर ऐप एक्सेस एंड ऑल. ऐप के बारे में बताया जाएगा, कैसे एक्सेस कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स. लाइव सेशन 28th of December, 20 तारीख 8 to 9. फर्स्ट सेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाउंडेशन वीडियो 1. बेसिक फाउंडेशन शुरू हो रहा है, आपको फाउंडेशन वीडियो 1 दिया गया. इट्स अ लाइव अलाइक सेशन. 21st December, अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाउंडेशन वीडियो 2 आपको दिया गया. और फाउंडेशन वीडियो 1, 2 के अंदर बहुत सारे छोटे वीडियोस होते हैं. 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स के छोटे स्मॉल साइज वीडियोस होते हैं, कंसेप्ट टॉपिक वाइज. Indrail, I'm audible? Yes sir, very good evening. You are absolutely audible. So students, जैसे मैंने कहा था, रोहित sir is with us and now you will know कि पढ़ाया कैसे जाता है. So very good evening, over to you Mr. Rohit Ghosh sir. मेरे को जरा होस्ट बनाओ. Yes sir. Hi, good evening all of you. Good evening to one and all the students over here. Indrail, am I audible? तो आप chat box में yes लिख दो. And I would like all of you to say yes on the chat box. अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो. I will be using Hindi and English. So जो Skill Edge के classes में use होता है. Skill Edge is one of those platforms where we use Hindi and English. Sometimes you know local language is also used. Sometimes Marathi and South Indian language also. But yeah, fundamentally it's Hindi. And then the interview preparation is in English. So
मैंने अंकित सर को सुना, अंकित सर बात कर रहे थे एंड सो मैं दो बातें बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को, राइट, एंड आई आल्सो शो यू कि हम पढ़ाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, ताकि आपको समझ में आए जो इंसान बात कर रहा है वो कौन से पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। सो पिछले 17-18 साल में मैंने 10 लाख के ऊपर 10 लाख स्टूडेंट्स आई हैव कोच्ड एंड आई हैव मेड देम either study from IIMs to Harvard or they are working from TCS to Google or Goldman Sachs, JP Morgan and so forth. ठीक है? So fundamentally as an individual and now as a company we know कि पढ़ाते कैसे हैं। कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत सारा है हर जगह पे, यूडेमी से लेकर यूट्यूब से लेकर you know everyone is doing something or the other, but fundamentally क्या होता है कि, and this is the first point I'm talking, होता क्या है कि when we are in graduate college, when we were or postgraduate college, ideally वहां पे पढ़ाई ऐसे करवानी चाहिए that you become job ready, but that doesn't happen if you are from a tier 2 tier 3 college, right, because professors have never worked in industry एंड वो पढ़ाने का तरीका पुराना वाला ही है कि पीपीटी रन करके पढ़ा दो, और पढ़ाने का बेसिक रीजन है कि यू शुड एटलीस्ट क्लियर द पेपर। सो देयर इज नॉलेज दैट इज इम्पार्टेड बट देयर इज नो स्किल डेवलपमेंट, और इवन इफ स्किल डेवलपमेंट है तो वो परसेंटेज कम है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई वी एज अ कंपनी हैड टू कम इन पिक्चर, राइट, सो दैट आपको वो हैंड्स ऑन कराया जाए, यू नो, आपको वो चीजें कराया जाए जो इंडस्ट्री को चाहिए for specific job titles. That's number one. Number two, if I come to this particular job role, this is an analyst profile, right? Analyst profile is a family of jobs. Financial analyst, credit analyst, equity analyst, investment analyst, market analyst. It's a family of jobs. Now, in order to become an analyst, whether so you can be from a MCom, BCom, MBA finance, PGDM finance, BBA finance, or you can be a non-finance academically also, like you can be a BTech, right? Now if you want to become an analyst, there are three you know things that you can do. Number one, you enroll for CA, chartered accountant. Okay, now chartered accountancy में आपको 2-3 साल लगेंगे, obviously उतना energy, टाइम, पैसा चाहिए और उतना दिमाग भी चाहिए, ये आपको ही पता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कैट वगैरह पेपर दो और एमबीए करो अगर एनालिस्ट बनना है तो, पर एमबीए आपको टियर 1 कॉलेज से करना पड़ेगा। टियर 1 कॉलेज इंडिया में 20-25 कॉलेजेस हैं। अगर आपको उन 20-25 कॉलेज में मौका मिलता है कैट में, से फॉर एग्जांपल अराउंड 95-96 परसेंटाइल, तो आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो। या आपने 12वीं के बाद अगर बीकॉम किसी टॉप टियर कॉलेज से किया है, हंसराज, वेंकी जैसे कॉलेज से किया है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप एनालिस्ट प्रोफाइल पे अप्लाई कर सकते हो। और तीसरा तरीका है एनालिस्ट बनने का, इफ यू अप्लाई फॉर सीएफए। सीएफए में 3 साल लगेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और 6-7 लाख रुपए लगता है, ठीक है। ऑब्वियसली एमबीए में 10-12 लाख रुपए लगेगा, राइट। नाउ मेरा पॉइंट ये है, एंड इसी इंटेंट के साथ ये कोर्स स्टार्ट हुआ है आज से 9 महीने पहले, where more than 400 students are learning this program. The point is very clear. If you do not want to invest right now 10 lakh rupees by taking a loan, if you do not want to invest 6 lakh rupees, you do not want to invest 3 years to become a CA, but you want to become an analyst, then you need to have a skill-based program. So rather than doing a Bombay Stock Exchange या National Stock Exchange या NCFM के रैंडम सर्टिफिकेशंस या कुछ फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक कोर्स कर लिया या किसी और जगह से कुछ यू नो एडवांस एक्सेल कर लिया, उससे एनालिस्ट नहीं बन सकते। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम इन चीजों को रिप्लेस नहीं कर रहा है। ये वाला प्रोग्राम आपको एनालिस्ट प्रोफाइल में एंटर करवाएगा। ऑब्वियसली आपको इनमें से कोई एक चीज करनी ही पड़ेगी अगले 2 साल के बाद, बट यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड।
So this program is a bridge between you and your dream of becoming an analyst. If you want to become an analyst, the family of jobs, I told you, any one of the five profiles, then you need to have the relevant skills. Now, this program is the bridge between you and your analyst profile career that can take a leap. Okay. Now, these are the first two things that I want to tell you. Okay. अगर यहां तक बात समझ में आई है तो क्विकली एक yes बोल दीजिए and then I will move ahead. अभी तक मैंने जो बोला है बात समझ में आई? Does it make sense to you? Put a yes in the chat box. Yes, no, maybe, whatever जो दिमाग में आता है. Put a yes, no, maybe in the chat box. अभी तक जो बात बोली, does it make sense to you? All right. अगले 5 से 7 मिनट में थैंक यू फॉर दोज हु हैव रिप्लाइड. स्किल एज की क्लासेस में रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी क्लासेस आगे भी बढ़ती है. आप अलग अलग लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट करोगे. आई एम बैंगलोर के प्रोफेसर्स मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे क्लासेस में. मैं खुद दुनिया का नंबर 1 बी स्कूल से पढ़ा हूँ, INSEAD फ्रांस. और जैसे मैंने कहा मुझे यू नो आई लाइक इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स व्हिच आई हैव डन ओवर द लास्ट 17 years, right? Yes, absolutely, Akshay. I know semi-qualified का मतलब क्या होता है. यहाँ पे there are students who are चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर उनका रैंकिंग बहुत पीछे है. CMP है, उनके रैंकिंग पीछे है, वो भी ये कोर्स कर रहे हैं. बिकॉज होता क्या है कि वो हम नंबर तो लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्किल बेस्ड अप्रोच दिमाग में बैठता नहीं है. सो इट्स रेलिवेंट फॉर यू. एब्सोल्युटली. कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक एनालिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, पहले मैं वो बता देता हूं आपको. बहुत फंडामेंटल पॉइंट बोलूंगा. एनालिस्ट बनने के लिए तीन स्किल्स चाहिए. 3 स्किल्स, राइट? सबसे पहले योर एबिलिटी. किसी की एबिलिटी, मैं उसको थोड़ा आसान भाषा में बोलूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा. प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब है फाइनेंशियल डेटा को देखना आना चाहिए. फाइनेंशियल डेटा को देखना आना चाहिए. अच्छा, मतलब फाइनेंशियल डेटा आपके सामने होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेटा क्या बता रहा है. इसको हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट? तो पहला स्किल जो चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्वर. अब छोटी सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो एक अकाउंटेंट करता है. टैली में जाकर, ERP में जाकर बैलेंस शीट बनने के बाद उसको पढ़ना और एक रिपोर्ट बनाना वो एक एनालिस्ट का काम है. छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने. दैट इज पहला स्किल क्या हुआ. देखो, आप ये प्रोग्राम करो ना करो, पर अगर आपको करियर बनाना है तो ये ज्ञान समझ लो और इसी पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो ये ध्यान से सुन लो. और आप हमेशा मेरे टच में रह सकते हो जैसे स्टूडेंट मेरे टच में रहते हैं. सो एनालिस्ट बनने के लिए पहले क्या चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्वर. कि मेरे को फाइनेंशियल डेटा को पढ़ना आना चाहिए और पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि वो डेटा क्या बोल रहा है. दूसरा स्किल, एक बार डेटा समझ में आ गया तो स्टोरी बनाना आना चाहिए, कहानी बनाना आना चाहिए. एक एनालिस्ट को कहानी बनाना नहीं आएगा ना डेटा पे तो मजा नहीं आएगा. कहानी बनाने का मतलब, बैलेंस शीट आपके सामने है, बैलेंस शीट आपने किसी कंपनी का पढ़ा, उसको बोलते हैं डेटा को समझना. और वो डेटा को समझ के अब आप कहानी बना रहे हो. कहानी का मतलब ये कंपनी अगले 5 साल में क्या कर सकती है, उसको कहानी बनाना बोलते हैं. स्टोरी टेलिंग ये एक स्किल है. जैसे डेटा पढ़ना एक स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है. दूसरा स्किल क्या है? स्टोरी टेलिंग. आप डेटा के साथ कहानियां कैसे बना सकते हो. और तीसरा स्किल जो चाहिए एनालिस्ट बनने के लिए, कोई भी एनालिस्ट बनने के लिए, वो 5 में से कोई भी एनालिस्ट बनने के लिए, जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या करियर का एंड कर रहे हो, तो तीसरा स्किल चाहिए. वो है, अगर आपको स्टोरी बनाना आ गया तो स्टोरी बोलना भी आना चाहिए, स्टोरी लिखना भी आना चाहिए. दैट इज कम्युनिकेशन, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल. अगर हमें पता है कि एनालिस्ट बनने के लिए ये 3 स्किल्स चाहिए, तो स्किल एज आपको यही 3 स्किल्स 9 मॉड्यूल्स में सिखाएगा कि भैया पढ़ते कैसे हैं, डेटा को पढ़ते कैसे हैं.
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एसक्यूएल। सो ये होता है डेटा को पढ़ना। फिर होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब है फाइनेंशियल एनालिसिस। स्टोरी कैसे बनाएं, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी कैसे बनाएं, इसको बोलते हैं। और तीसरे को बोलते हैं कम्युनिकेशन, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल। तो इन 3 स्किल्स पे आपकी पढ़ाई होती है स्किल एज में अगले 12 हफ्ते। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आपका सीवी, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाकर कंपनी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। पढ़ाई आपको करनी है, पढ़ाने का तरीका हम बताएंगे, उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। हमें पता है आपके पास दिन में 1 घंटा या बहुत ज्यादा हुआ 1.5 घंटा है पढ़ाई करने को, वो होना चाहिए। अगर है तो प्रोग्राम में आइए, वो भी नहीं है तो मत आइए, क्योंकि हम एचआर कंसल्टेंट नहीं है कि आपका सीवी आगे कर देंगे। तो बिना स्किल डेवलपमेंट में सीवी कैसे आगे करेंगे? अच्छा, इसीलिए शायद स्टूडेंट्स को मजा भी आता है स्किल एज में, क्योंकि स्किल एज रेगुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। अभी तक समझ में आ गया होगा बात करते हुए मुझसे, जहां पे ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा पढ़ना क्या है, पर कैसे पढ़ते हैं ये भी आपको हमारे मेंटर्स बताएंगे। और आप ऑब्वियसली मेरे साथ कंटिन्यूअसली टच में रहोगे, तो लोग डांट भी सुनते हैं, लोग शाबाशी भी खाते हैं जब वो एग्जाम्स में, टेस्ट में, असाइनमेंट में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, क्योंकि करियर की बात है। वी केयर फॉर योर करियर, दैट्स वेयर आवर मोटो इज, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको बिफोर वी बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू इंद्रनील वंस अगेन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप। सो एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको भी ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, मैं एक चीज लिख रहा हूं इसमें, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं मैं, बैक कैमरा मैंने चेंज किया हुआ है थोड़ा बहुत, अगर कैमरे में दिख रहा होगा आपको तो हाँ, ये मैंने AR लिखा हुआ है। AR का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब होता है अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया और आप मुझे 3 दिन बाद वो पैसा देने वाले हो, तो मेरे इंडिविजुअल बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल्स में 100 रुपए लिखा होगा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया अकाउंट रिसीवेबल्स होता क्या है। अब मैं 3 कंपनी के नाम लिखने वाला हूं, ठीक है। एक है इंटेल, एक है अमेजॉन और एक है ऑफिस डिपो। सो मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंटेल क्या है? इंटेल एक चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो चिप बनाती है। अमेजॉन क्या है? अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है, राइट, इट्स एन ई कॉमर्स कंपनी। एंड ऑफिस डिपो क्या है? ऑफिस डिपो एक स्टेशनरी कंपनी है जहां पे ऑफिस के स्टेशनरी मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स अ स्टेशनरी कंपनी, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, ये एक एनालिस्ट कंपनी में ऐसा ही काम करता है। बाय द वे, मैंने एक छोटा सा आपके सामने ये इसको बोलते हैं केसलेट, बोलते हैं केसलेट। जो मैं बात कर रहा हूं इसको केसलेट बोलते हैं, जो टिपिकली किसी भी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ये केसलेट यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पे हर वो बात मिलेगी जो इंडस्ट्री में हो रहा है, और देखो सीखोगे कैसे आप, क्योंकि यही वाला काम एनालिस्ट करता है कंपनी में। अब अगर मैं आपको बोलूं इन 3 कंपनीज में, इंटेल, अमेजॉन एंड ऑफिस डिपो, मैंने आपको बता दिया कंपनी करती क्या है। इन तीनों में आप अकाउंट रिसीवेबल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है और लोएस्ट किसका है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट अकाउंट रिसीवेबल इन 3 कंपनीज में से हाईएस्ट किसका है और लोएस्ट किसका है? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका जवाब आप 1 मिनट के अंदर चैट बॉक्स में रखो कि ऐसे लिखो, एच डैश कौन किस कंपनी का हाईएस्ट अकाउंट रिसीवेबल्स होगा या लोएस्ट अकाउंट रिसीवेबल होगा। जरा आप इसको चैट बॉक्स में लिखो 1 मिनट में, एंड देन वी विल टेक इट अहेड। सवाल अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिखना जरा। सवाल समझ में आया? चैट बॉक्स में जरा यस लिखना। हाँ जी, आई जस्ट पुट द फोन इन द चार्जर। हाँ जी, 1 मिनट में जवाब दीजिए जरा।
हर्षिता, सवाल ऐसा है कि अकाउंट रिसीवेबल अमेजॉन, इंटेल एंड ऑफिस डिपो, इन 3 कंपनीज में से सबसे ज्यादा या सबसे कम अकाउंट रिसीवेबल्स किसका होगा? आपके सामने बैलेंस शीट नहीं है, पर तभी आपको बताना है। इसी को प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं और स्टोरी बनाना बोलते हैं। अगर आप मेरी बात समझो मैं क्या बोला है, अब समझ में आया सवाल? सबसे ज्यादा अकाउंट रिसीवेबल्स किसका होगा एंड सबसे कम किसका होगा? 3 कंपनीज है, एच बोल के, एच डैश एल डैश, ये जवाब देना है आपको। जल्दी जल्दी। देखो अब दिमाग चलना चाहिए, अब दिमाग चलेगा। अच्छा, अब चलिए मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूं आपका मदद करता हूं मैं आपको। देखिए सुनिए, चिन्मय, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव, थैंक यू फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव। अब जरा बात करता हूं मैं, ठीक है? अब देखो एनालिस्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, अब इसमें आता है आपका सेक्टोरियल एनालिसिस। अगर आप इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनते हो या क्रेडिट एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, सेक्टोरियल एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी अमेजॉन क्या कंपनी है? अमेजॉन एक B2C कंपनी है। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पे, तभी हमने कहा ई कॉमर्स कंपनी है, जहां पे आप जाते हो, ऑनलाइन में सामान खरीदते हो, पैसा देते हो, सामान खरीदते हो। अच्छा, इंटेल क्या कंपनी है? इंटेल B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। क्यों? क्योंकि इंटेल से आप चिप नहीं खरीदते। इंटेल से चिप कौन खरीदता है? कंज्यूमर नहीं खरीदता है, वो डेल खरीदता है, लिनोवो खरीदता है। आप डेल से लैपटॉप खरीदते हो, फोन खरीदते हो। सो इंटेल क्या है? B2B है, ठीक है? अच्छा, ऑफिस डिपो क्या है? ऑफिस डिपो एक स्टेशनरी का दुकान है जहां पे ऑफिस स्टेशनरी मिलती है, तो वो B2C भी है, B2B भी है। कैसे? अगर मैं गया खरीदने के लिए तो B2C बन गया। अगर किसी एचआर ने, ऑफिस के एचआर ने ऑफिस डिपो को फोन किया और बोला हमारी कंपनी के लिए कुछ नोटपैड दे दो, तो वो B2B हो गया। अच्छा, अभी यहां तक समझ में आया? पहले तो यस बोल दो फटाफट अगर यहां तक समझ में आया, सेक्टर समझ में आया। मैंने क्या बोला? B2B एंड B2C। बहुत आसान भाषा में बात कर रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी, आई वॉन्ट क्विक रिप्लाईज बिफोर आई हैंड ओवर टू इंद्रनील सर। अच्छा, अब पॉइंट ये है, जरा सोच के देखो, अगर आप B2C हो तो आपने पैसा, आप कस्टमर गया आपके पास, कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया, कस्टमर ने आपको पैसा दिया, तो अकाउंट रिसीवेबल अगर आप B2C हो तो कम होगा कि ज्यादा होगा? हाई की लो? एच या एल? एच या एल? अगर आप B2C हो, कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने कस्टमर को, अरे ध्यान से सुनो, आपने कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने कस्टमर उसको पैसा दिया, तो अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा होगा कम होगा? अभी मैंने B2B अकाउंट वाले रिसीवेबल, का ज्यादा होगा। अरे मेरी बात अनम्यूट मत करो, चैट बॉक्स में डालो, ये एग्जांपल जो बोल रहा हूं उसका जवाब दो। और अटेंशन टू डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिस्ट बनने के लिए। हाँ चिन्मय, कम होगा। क्यों? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले एग्जांपल क्या दिया था? अगर आपने अपने दोस्त को 100 रुपए दिया और वो 3 दिन बाद आपको पैसा देगा, तो आपके अकाउंट रिसीवेबल पे 100 रुपए आएगा। अगर उसने उसी दिन दे दिया आपको 100 रुपए, तो अकाउंट रिसीवेबल तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आप लोग सही समझ रहे हो, अगर B2C है तो अकाउंट रिसीवेबल्स कम होगा, एब्सोल्युटली। अब B2B है, आपको ही पता है कंपनी टू कंपनी में पैसा इमीडिएटली नहीं आता है, कभी कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? B2B में। तो अगर B2B है तो अकाउंट रिसीवेबल्स ज्यादा होगा, एग्जैक्टली। अब ये सेक्टोरियल एनालिसिस है। आपके पास अगर ये 3 कंपनीज आई और कहा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को इन्वेस्ट करना है इन 3 कंपनीज में, ये सोचते हुए कि अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो अकाउंट रिसीवेबल किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा इन 3 कंपनीज में से ऑब्वियसली बात है इंटेल का सबसे ज्यादा होगा, इट्स अ B2B। सबसे कम किसका होगा? अमेजॉन का सबसे कम होगा, B2C। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलेगा, अगर उसका क्राइटेरिया है कि मुझे उस कंपनी में पैसा लगाना है जहां पे अकाउंट रिसीवेबल्स कम है, तो बोलेगा मैं तो B2C कंपनी में लगाऊंगा, बिकॉज वहां पे अकाउंट रिसीवेबल कम होता है, कस्टमर को प्रोडक्ट गया और पैसा कस्टमर और कंपनी के पास आ गया। और ऑफिस डिपो का जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो डेफिनेटली हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में होगा, बिकॉज वो B2C और B2B दोनों है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं
This is what an analyst does in a company in various formats, and this is how you learn in Skill Edge. So guys, मजा आया? Can I get a quiz? Yes on thumbs up in the chat box. समझ में आया क्या पूरा? Did you get it what I'm saying? Did you get it what we are talking? Yeah? Great. So guys, thank you so much for patient hearing. बड़ा मजेदार और amazing course है ये. इंडिया में इस तरह का comprehensive program पहली बार है with absolutely no financial pressure on the students, and I think that's why students are enjoying it. आप लोगों का personal interview होगा. कुछ personal interview में मैं खुद आता हूँ immediately after this induction program. आज और कल में हो जाता है, and then the program starts. So all the best to all of you, those who want to build your career as an analyst. We look forward to meeting you in the program. You can always be in touch with me through social media and other handles of Skill Edge, जो इंद्रनील सर आपको बता देंगे. Over to Indranil for the next 5 to 10 minutes. Thank you guys. Thank you for your patient hearing. Lovely talking to you. Yeah, if anyone is having any question, you can ask me. We have another 2 to 3 minutes. You please ask if you have any question to Rohit sir. And you can always get in touch with me one-to-one if you have any if you want to do some interaction with me for your career, for your everything. All right, Indranil, over to you. Thank you so much, guys. Take care and good evening. Thank you, sir. Students, just give me 2 seconds. I'm sharing my PPT 1 second. Okay. So obviously, आपको समझ में आ गया होगा अकाउंट रिसीवेबल. एक चीज याद रखना, अकाउंट रिसीवेबल कम होना चाहिए. जितना जल्दी पैसा आएगा उतना अच्छा है. सो यही थॉट प्रोसेस है एनालिस्ट की. ये तो एक बेसिक एग्जांपल था, बहुत ही बेसिक. एडवांस लेवल पे सोचो किस लेवल की सोच होना चाहिए. सो वी वर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड जहां पे मैं आपको सेशन शेड्यूल कैसे होता है उसके बारे में बता रहा था. सो क्विकली अनदर 10 मिनट एंड पूरे हम लोग प्राइसिंग पे आ जाएंगे. ऑलरेडी सेशन हम क्लोज कर देंगे. अनदर 10 मिनट्स. सो 21 दिसंबर देखो मैं यहाँ पे था. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाउंडेशन वीडियो 2. सो 2 दिन आपको फाउंडेशन वीडियो दिया गया, छोटे छोटे वीडियोस, आपको उसको देखना है. नाउ 22 दिसंबर पे देखो क्या हो रहा है. डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर फाउंडेशन वीडियो 1 एंड 2. ये लाइव सेशन होगा. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे, अंकित सर आएंगे, और जो 1 और 2 वीडियोस आपने देखा है उसके ऊपर डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है. आपको पूछा जाएगा, आपको पूछना पड़ेगा. हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होगा तो करना पड़ेगा. 23 दिसंबर अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाउंडेशन वीडियो 3 आपको दिया गया. नाउ 24 दिसंबर डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर फाउंडेशन वीडियो 1 2 3. 1 2 का फिर से डाउट क्लियरिंग, 3 का अगेन उसके साथ. 25 दिसंबर आपका सेल्फ स्टडी, उस दिन कोई क्लास नहीं रहेगा, सेल्फ स्टडी. एंड 26 दिसंबर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर टेस्ट. 1 2 3 वीडियोस आपने देख लिया है, उसके डाउट क्लियरिंग अगर हो गया है कंप्लीट, देन उसके बाद उसके टेस्ट. एंड इट्स अ लाइव टेस्ट सॉल्विंग सेशन. टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं टेस्ट दिया हो गया, नो. टेस्ट में गलती कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, उसके ऊपर भी लाइव सेशंस होता है. सो इन दिस वे द बेसिक स्ट्रक्चर, जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फाउंडेशन है, इस तरह से किया जाता है. जो एडवांस पार्ट है वो टोटली लाइव होगा. तो सोचो, जस्ट इमेजिन. एंड दिस इज द टेक्निक जो फॉरेन कंट्रीज में, IIM में, INSEAD में फॉलो किया जाता है. नाउ engagement process. Sign up for induction. आज right now you are in this induction. आपने different platform से इंक्वायरी किया, रजिस्ट्रेशन किया, आज इस इंडक्शन में आप हो. इसके बाद होगा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस मींस जहां पे सबसे पहला राउंड होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड. पर्सनल इंटरव्यू राउंड गूगल मीट पे होता है एंड 1:1 आपको वीडियो ऑन रखना है. मेंटर के साथ आपको 1:1 कन्वर्सेशन करना है. अगर इफ मेंटर आर हैप्पी विद योर कन्वर्सेशन, अगर पर्सनल इंटरव्यू में आप अगर मेंटर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वहीं पे सिलेक्शन हो जाता है. अदरवाइज और एक राउंड होता है, दैट इज टेक्निकल टेस्ट. एक टेक्निकल टेस्ट लिया जाता है. 30 मिनट, 30 MCQ, 30 क्वेश्चंस. इट्स MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर. ऑप्शंस रहेंगे जहां पे टेक्निकल और एप्टीट्यूड दोनों क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद सिलेक्ट अगर हो जाते हो, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, कोर्स शुरू हो जाएगा. आप
एग्रीमेंट होता है उसके बाद, कोर्स शुरू होने के कुछ दिनों बाद। एग्रीमेंट के बारे में जब मैं फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अब कोर्स शुरू होने के बाद शुरू होगा आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आपने टेस्ट दिया, क्या हुआ, अटेंडेंस, सब कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। Our mentor, we have a separate mentor for technical, for non-technical, means communication, verbal, non-verbal. ये सब लोग मिलके आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाएंगे, that is mock interview and all. Finally, CCT, कोर्स कंप्लीशन टेस्ट। जब कोर्स खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, तब एक फाइनल टेस्ट होगा, that is called कोर्स कंप्लीशन टेस्ट, and you have to clear the test. टेस्ट क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, we will give you certificate, and in that particular certificate वहां पे मेंशन होगा 100% एम्प्लॉयबिलिटी सर्टिफिकेट, ये मेंशन लिखा रहेगा सर्टिफिकेट पे। नेक्स्ट, प्लेसमेंट ड्राइव। वी हैव आवर ओन HR टीम who they will prepare your digital CV, LinkedIn profile, and finally आपके प्लेसमेंट ड्राइव शेड्यूल किया जाएगा। And they will, our HR will also ask you 2 preferred location, आपको 2 preferred location देना पड़ेगा कि मैं इसी लोकेशन पे जॉब चाहता हूं। Then finally your placement. Now the next slide is your pricing. Students, pricing, price, money, इस तरह से इस कोर्स का डिजाइन किया गया है ताकि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना हो, और सही में नहीं है बर्डन। अगर सोचा जाए तो मैं जब आपको प्राइसिंग बताऊंगा, एनालिस्ट प्रोफाइल की तैयारी करने के लिए ये प्राइस कुछ भी नहीं है। एंड 80% of the fees that you will pay whenever you will get your job, that twin 12-month EMI, इसकी 80% जो फी है वो पे आफ्टर प्लेसमेंट मोड में है। प्लेसमेंट मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद 12 मंथ के EMI में आप पे करते हो 80% फी, और जो 20% फी है वेरी नॉमिनल, दैट यू विल पे ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान 4 मंथ, वो भी 4 मंथ के EMI में पे करते हो। एंड few things are not written in the next slide because it's a PPT, this is not a PDF, सब कुछ लिखना possible नहीं है, but I will tell you each and every point जो लिखा नहीं है। आपके मन में वो सवाल आ सकता है, but मैं during my conversation I will tell you each and everything, सारे सवालों का जवाब मैं मेरी बातों में ही दे दूंगा। ओके, क्लियर? नाउ फी स्ट्रक्चर के बाद है सैलरी पैकेज का रेंज, उसमें भी 3 कैटेगरी है। एंड एक ऑफर है टुडे, एक ऑफर है जो मैं बताऊंगा। सो नाउ इट्स अ टाइम टू नो द फी स्ट्रक्चर। दिस इज द एंटायर फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले देखो पे आफ्टर प्लेसमेंट कितना है। पे आफ्टर प्लेसमेंट है 60,000। पे आफ्टर प्लेसमेंट इट मींस प्लेसमेंट होने के बाद, जॉब मिलने के बाद, सैलरी आने के बाद 12 मंथ के EMI में पे करोगे आप। जो भी पे आफ्टर प्लेसमेंट का 60,000 फी है, मींस 12 मंथ इंटू 5,000, 12 महीने तक जॉब मिलने के बाद, सैलरी आने के बाद। एंड 20,000 जो ट्रेनिंग फी स्टार्टिंग में लिया जाता है, वो भी आप 4 मंथ के EMI में पे करोगे, दैट यू विल पे इन 4 मंथ EMI, दैट इज 4 मंथ इंटू 5,000, 20,000। एंड ये नो कॉस्ट EMI है, इसमें कोई GST वगैरह नहीं लगेगा। इट ऑलरेडी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये भी जो फीस है, तो टोटल फीस कितना हुआ 80,000, ये इंक्लूडिंग GST है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 60,000 पे आफ्टर प्लेसमेंट, 12 मंथ EMI, जॉब में सैलरी, आपकी सैलरी आएगा तभी आप दोगे। एंड 20,000 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जैसे आप ज्वाइन करते हो तब से लेके 4 महीने तक आप 5-5 हजार करके पे करोगे। आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, जहां पे CFA वगैरह करने के लिए 6-7 लाख रुपए लग जाता है, 3-3 साल, 2-2 साल लग जाते हैं। सो द टोटल प्रोग्राम फी इज 80,000 व्हिच इज डिवाइडेड इन दिस 2 पार्ट। एक ऑप्शन और भी स्टूडेंट्स लेते हैं, दैट इज कोई ऐसा कहते हैं कि सर वी नीड सम डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट चाहिए तो वो 1 टाइम पेमेंट है, 10% डिस्काउंट मिलता है, 1 टाइम, एक ही बार में पे कर देते हैं स्टार्टिंग में। बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज द प्रीवियस फर्स्ट वन, पे आफ्टर प्लेसमेंट and during the training fee in 4 month EMI. It's including GST। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत शार्प है तो सोच लो 80,000 में स्किल एज GST कितना भर रहा है, 18% GST भर रहा है, तो स्किल एज को मिल कितना रहा है,
67,000 समथिंग स्किल एज को मिल रहा है, 67,000, क्योंकि ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, आपको कुछ नहीं भरना है। आई डोंट थिंक इससे बेहतर कुछ हो सकता है। नाउ फ्यू हिडन स्टोरीज जो लिखा नहीं है। पे आफ्टर प्लेसमेंट व्हाट आई हैव टोल्ड दैट इज 60,000, ठीक है। सो आपने ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के दौरान पूरी फीस पे किए, वो भी ईएमआई में, बट पे आफ्टर प्लेसमेंट 60,000 जॉब मिलने के बाद जब आपका शुरू हुआ 5 मंथ तक आपने ईएमआई दिया ठीक ठाक से, बट सपोज 5 मंथ के बाद ड्यू टू सम रीजन, हेल्थ इशू, मे बी हेल्थ इशू हो सकता है, आपको जॉब छोड़ना पड़ा। 5 महीने तक आपने ईएमआई दिया, आप जॉब कर रहे थे, ईएमआई दिया, 5 महीने बाद ड्यू टू सम हेल्थ इशू आपको जॉब छोड़ना पड़ा। इन दैट कंडीशन ये जो ईएमआई हमारा है, क्या आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा? व्हाट इज योर आंसर सर? आंसर इज नो। इन दैट कंडीशन किसी के साथ भी अगर ऐसा होता है, ईएमआई स्टॉप हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन? अगेन वी विल कंडक्ट प्लेसमेंट ड्राइव फॉर यू। फिर से आपके साथ प्लेसमेंट ड्राइव होगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक स्टॉप रहेगा ईएमआई। फिर से जब आपको जॉब मिलेगा, फिर से जब आपका सैलरी शुरू होगा, तो जहां पे रुक गया था, 5 मंथ तक दिए थे, रुक गया था, उसके आगे से शुरू होगा, 6th मंथ से शुरू होगा, बिकॉज फाइनली एट द एंड वी नीड आवर ट्रेनिंग फीस, राइट? ग्रेट सर, कैन यू गिव ऑल दिस थिंग्स इन अ रिटन फॉर्मेट? क्या ये सारी बातें रिटन में लिखा मिलेगा? यस। अब मैं बता रहा हूं वो जो एग्रीमेंट वाला पोर्शन था, दिस इज द रीजन वी विल डू अ प्रॉपर एग्रीमेंट पेपर वर्क विथ यू। जब आप ज्वाइन करते हो, क्लास होने के 7 से 10 दिन बाद आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। दिस इज द रीजन। ये सारी चीजें रिटन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग फीस तो दिया, सब कुछ सीख लिया, देन वैनिश, देन इट्स अ बिग डिजास्टर। हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उसने सब कुछ सीख लिया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू एज वेल एज फॉर अस आल्सो। इट शोज दैट स्किल एज इज 100% कॉन्फिडेंट। जो 20 बच्चों को स्टूडेंट सिलेक्ट किया जाएगा वो जॉब लेके ही जाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। किसी ने पूछा था कि जॉब नहीं मिला, तो ऑप्शन ही नहीं है। स्टार्टिंग से ही आपके ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग होता है, तो हमें समझ में आ जाएगा ये स्टूडेंट सीरियस है या नहीं है। आपको सीरियस रहना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑल ऑफ यू आर हियर, आप 1.5 घंटे से हो, डेफिनेटली आप अपने करियर को लेकर सीरियस हो, इसीलिए आपको अभी भी। सो जो सीरियस है वो करेगा। एंड 3 मंथ ऐसे ही देखते देखते निकल जाता है, बहुत लंबी ड्यूरेशन नहीं है। ओनली 3 मंथ योर कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर कैरियर, कैन बिल्ड योर कैरियर, कैन फुलफिल योर ड्रीम। आपके सपने पूरा हो सकता है। नाउ द सैलरी पैकेज रेंज क्विकली। सैलरी पैकेज की 3 रेंज है। रेंज दैट इज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जो फ्रेशर है, पूरी तरह से फ्रेशर है, जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया, फ्रेशर, उनके एक रेंज है। कैटेगरी 2 जो फ्रेशर नहीं है, काम किया है बट नॉट इन बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस सेक्टर पे नहीं किया है, किसी और सेक्टर पे किया है, उनका एक अलग कैटेगरी है। एंड द थर्ड कैटेगरी जो फ्रेशर नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर, दैट टू इन बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर पे एक्सपीरियंस है, उनका एक अलग कैटेगरी है। सो द फर्स्ट कैटेगरी A1, बीकॉम, बीबीए, पीजीडीएम, एमबीए, बीटेक, बीई, बीएससी, बीए, कोई भी ग्रेजुएशन आप किए होंगे, बट यू आर अ फ्रेशर। Minimum salary package would be 2.5 lakh per annum. It's minimum, guys. It's minimum. अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, 4-5 तक भी रेंज गया है, फ्रेशर लेवल में भी इतना पैकेज लेके गए हैं हमारे स्टूडेंट्स। सो इफ यू आर सीरियस फ्रॉम द डे 1 तो आपको ज्यादा पैकेज भी मिल सकता है, बट इट्स मिनिमम एज पर द राइट नाउ द इंडस्ट्री का जो नॉर्म्स है। A2, बीकॉम, बीबीए, पीजीडीएम, एमबीए, बीटेक, बीई, बीएससी, बीए, experienced but in non BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर पे काम नहीं किया है, किसी और सेक्टर पे काम किया है, कुछ और ही किया है, उनके बट एक्सपीरियंस है। मिनिमम ₹3 लाख पर एनम। अगेन इट्स मिनिमम, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड हाउ यू परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो उसके ऊपर आपके पैकेज डिपेंड करेगा। 4.5 तक भी जाता है, एंड आपके पास अगर अदर सेक्टर का भी एक्सपीरियंस हो तो 6.5 तक भी जा सकता है। A3 इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल,
विथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस है इन बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर पे अकाउंट, आपके अगर अकाउंट एज एन अकाउंटेंट भी काम किया हो वो भी बीएफएसआई सेक्टर में ही आता है। मिनिमम 25 to 30% हाइक इन करेंट सीटीसी। आज जो सीटीसी आपको मिल रहा है उससे 25 to 30% हाइक होके ही आप एनालिस्ट प्रोफाइल पे ज्वाइन करोगे। एंड सोचो जब 25 to 30% हाइक लेके एनालिस्ट प्रोफाइल पे ज्वाइन कर रहे हो, 2 साल बाद वो पैकेज कहां पहुंचेगा? इफ यू आर अ परफॉर्मर, अगर आप परफॉर्मर हो तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। अगर आपको हाई पैकेज, हाई सैलरी चाहिए फाइनेंस डोमेन पे, तो आपको एनालिस्ट प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। नॉर्मल जो काम है, नॉर्मली जो बीएफएसआई सेक्टर है, वहां पे कभी भी आप 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ की पैकेज नहीं सोच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक जगह पे जाके रुक जाता है नॉर्मल सेक्टर पे। इफ यू हैव ए स्किल, इफ यू हैव ए ड्रीम, अगर आप सोच सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बना सकते हो चीजें, तो डेफिनेटली आप उतनी अमाउंट अर्न कर सकते हो, उससे भी ज्यादा कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके ड्रीम होना चाहिए। अनलिमिटेड कैरियर, अनलिमिटेड कैरियर इन द सेंस ऑफ मनी। नाउ आई हैव टोल्ड यू ऑफर, इट्स कॉल्ड गोल्डन आवर एंट्री। This is valid only for next 24 hour. Next 24 hour means tomorrow, कल रात के 9, 9:30 तक ये वैलिड रहेगा। ₹2,000 डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ इंस्टॉलमेंट। जो 4 मंथ में आप 5-5 हजार पे करोगे ना, तो पहले मंथ का जो 5,000 है उसमें 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इट मीन्स 3,000 देके आप एंट्री कर सकते हो। जो 20,000 था वो आपके 18,000 में हो जाएगा। बट इट इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 24 आवर। और उससे भी पहले आपको जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो उसे क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। वन मोर ऑफर, इट्स कॉल्ड रेफरल सिस्टम। गेट 1,000 गिव 1,000। अगर आपने किसी को रेफर किया तो आपको 1,000, अगर उसने एडमिशन लिया, सिलेक्ट हो गया, एडमिशन लिया, तो उसे 1,000 रुपये मिलेगा। और उसे 1,000 रुपये मिलेगा जिसने एडमिशन लिया, और आपको भी 1,000 रुपये मिलेगा क्योंकि आपने रेफर किया है। इट्स कॉल्ड रेफरल मैकेनिज्म। नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई एम रिक्वेस्टिंग Purvi ma'am, Alisha ma'am, please share the feedback link into the chat box quickly. It's very important students, अभी feedback link share किया जाएगा। Feedback link is very important, already shared by Purvi ma'am and Alisha ma'am. Feedback form fill करना it's compulsory, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आपके पर्सनल इंटरव्यू फाइनलाइज होगा कि आपके पर्सनल इंटरव्यू कब होगा, कितने बजे होगा। आपको लिंक शेयर किया जाएगा क्योंकि वो गूगल मीट पे होगा। फर्स्ट स्टेप इज योर पर्सनल इंटरव्यू। फॉर दिस फीडबैक, ये फीडबैक फॉर्म फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिल द फीडबैक फॉर्म, एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, हैप्पी टू आंसर। अगर किसी का कोई भी सवाल है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। If anyone is having any question, please ask your question. If anyone is having any question, you can ask your question. आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वीडियो ऑन करके पूछ सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। कोई भी सवाल, फीडबैक फॉर्म फिल करते करते अपने सवाल पूछ सकते हो। अभी तक आप हो तो कुछ स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स में दिखा देता हूं। ये अभी जो, और एक बात, ये जो फाइनेंस आपके पास जो मॉड्यूल आपके सामने है, द वर्जन इज FAE फिनांस एनालिस्ट एज 4.0। ये अपडेटेड वर्जन है 4.0, जहां पे स्टॉक, इक्विटीज के बहुत सारे फंडामेंटल एडवांस टॉपिक ऐड हुआ है। ये रिसेंट बैच की सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख लो। बीकॉम 2022, बीकॉम 19, मींस फ्रेशर भी है, एक्सपीरियंस लोग भी है। फ्यू मोर कुछ और दिखाता हूं मैं। अगेन बीकॉम 2021, सोनू बीकॉम। बीए आप देख रहे हो, प्रदीप विशे, बीए इन इकोनॉमिक्स 2017, ही इज एक्सपीरियंस गाय, वो कर रहा है। एंड रशिका MBA इन फाइनेंस। So all kind of students and different colleges से students, जिन्होंने different colleges से अपना graduation, post graduation किए हैं, they are with us.
So now ask your question. कुछ question मुझे दिख रहा है चैट बॉक्स में. सर, are you giving recording for lifetime? Yes, yes, yes. आपको जो हमारे ऐप का एक्सेस दिया जाएगा ना, वो आपका यूजर नेम पासवर्ड वो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा. Our app name is Skill Edge Persona. Skill Edge Persona. You can find this app in Google Play Store. आपको मिल जाएगा. But जब तक आप स्टूडेंट नहीं रहोगे तब तक नहीं बन जाते हो. Just a minute. जब तक आप स्टूडेंट नहीं बन जाते हो तब तक फुल ऐप की एक्सेस आपको नहीं मिलेगा. आपको हमारे जो गूगल प्ले स्टोर में जो ऐप मिलेगा ना, वो ऐप का डेमो वर्जन मिलेगा. क्योंकि अगर सभी लोग ऐप फ्री में यूज करने लगे तो हो गया ना. स्टूडेंट्स जब बन जाते हो तब आपको उसको एक्सेस मिल जाता है उसका, और वो लाइफ टाइम रहता है. डोंट वरी. Skill Edge Persona. Yeah, please. Good evening. I just had one question. I am Yes, yes. working with an organization and my current CTC is 5 LPA. Yeah, please, एक बार फिर से बताओ. Working, your CGPA is 5 LPA and working in where? Working in as an procurement associate, not as a VFSI sector, not in VFSI sector, but in operations profile. Okay. What is your academic background? MBA Finance, highest qualification. MBA Finance. And in which year you have completed your MBA Finance? 2022, only in this year. This year. But how many years of experience you have, or month? How many months of experience you have? कितने साल और मंथ का एक्सपीरियंस है आपका? हेलो. हाँ, कितने दिनों का, मंथ का, साल का एक्सपीरियंस है आपका? सैमसंग. One year of experience. Actually, this was a campus placement. I was just 6 months ago before the completion of my program, MBA program. Okay. What's your name? सैमसंग. आपका नाम नहीं दिख रहा है मुझे. Oh, sorry, Sanjit Jain. Actually, I have joined from संचित जैन. Okay. संचित, आप कैटेगरी 2 में आ रहे हो राइट नाउ. आप एक बात बताओ, आप जो काम करते हो एक्चुअली वहां पे करना क्या पड़ता है? Actually, basically, we are fulfilling the demand of the customer for the software. Like they demand, we are purchasing the software on behalf of our customer clients for better price. We offer them at better price. समझ गया. So यस. सो जो हमारे कैटेगरी है उसमें आप कैटेगरी 2 में आ रहे हो. कैटेगरी 2 में आ रहे हो. बट एक नॉर्मल जो वहां पे आपने कैटेगरी 2 में क्या देखा था, दैट इज मिनिमम 3 लाख पर annum. बट इफ यू आर अ परफॉर्मर, इफ यू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो आप आपके करंट जो पैकेज है उसके आसपास आपको मिल सकता है. बट आप कैटेगरी 2 में आ रहे हो. एंड एक बात हमेशा याद रखना, आप अभी जिस प्रोफाइल में हो वहां पे एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा कि मैं मोनोटोनस सेल्स की जॉब कर रहा हूँ या फिर मार्केटिंग टाइप की जॉब कर रहा हूँ. आपके पास चैलेंजिंग कुछ वर्क नहीं रहेगा. बट जब एनालिस्ट बन जाते हो ना, तो इट्स अ चैलेंज ही चैलेंज. आपको अच्छा लगेगा, हर दिन कुछ नया. एंड जहां पे चैलेंज होता है, जहां पे न्यू कुछ चीजें एवरीडे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसी पे सैलरी पैकेज ज्यादा मिलता है, उसी की डिमांड होता है. सो इस प्रोफाइल पे, आप जिस प्रोफाइल पे हो, इस पे आपने 10 साल भी निकाल लिया तो भी एक लेवल पे जाके वो रुक जाएगा. बट एनालिस्ट पे अगर एज एन एनालिस्ट अगर 10 साल निकाल लेते हो तो यू कांट इमेजिन, स्काई इज द लिमिट. हमेशा अपने लाइफ को 5-5 साल में डिवाइड करना कि मैं अगले 5 साल तक कहां पे पहुंचूंगा, नेक्स्ट 5 ईयर में मैं कहां पे पहुंचूंगा. डिजाइन योर डेकोरेट योर लाइफ इन दिस मैनर. वैसे सोचो. ऑफिशियली यू आर इन कैटेगरी 2, संजीत. Okay, thank you, Indra. Thank you for your Thank you. या और किसी को कुछ सवाल है, पूछो प्लीज. फिल द फीडबैक फॉर्म एंड आप अपनी सवाल पूछ सकते हो. दिस इज अवर कैटेगरी 2. मैं फिर से प्राइस पेज में आता हूं, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते. और एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है. ओके, इट्स अ फीडबैक फॉर्म. फिल द फीडबैक फॉर्म and if anyone is having any question, happy to answer. Please ask.
Great. So all the best for your test. First round is personal interview. Hope to see you all in the batch, in the current batch. So take care. All the best. Fill the feedback form. See you in personal interview. Maybe ऐसा हो सकता है मेरे साथ भी किसी का अरेंज हो जाए, रोहित सर के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है. Take care. Bye bye. Fill the feedback form. Don't forget.